बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 2 नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 6। और इसको स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें स्टार्ट। और आज का हमारा टॉपिक है स्टोरिंग इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो इन कंप्यूटर। कि कंप्यूटर के अंदर इमेजेस, ऑडियो और वीडियो किस तरह स्टोर करवाए जाते हैं। Have you ever wondered how your favorite photos, songs, and movies are stored on your computer on or phones? Let's divide into the fascinating world of digital storage to understand how computer manage these different types of files. कि कंप्यूटर किस तरह different types of files को manage। तो start करते हैं। सबसे पहले हमारे पास storing images। image को किस तरह store किया जाता है। Images are made up of tiny dots, यानी कि छोटे छोटे डॉट से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पिक्सल। Dots called pixels. Each pixel has a color, and the combination of all these pixels form the complete picture. यानी कि तमाम जो पिक्सल होते हैं उनका कॉम्बिनेशन क्या बनाता है, एक मुकम्मल तस्वीर बनाता है। कंप्यूटर स्टोर इमेजेस यूजिंग नंबर्स टू रिप्रेजेंट दीज कलर्स। अगर हम बात करें इसके इमेजेस फाइल फॉर्मेट की, कि इमेजेस फाइल के फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं। द फॉलोइंग आर कॉमनली यूज इमेजेस फॉर्मेट फॉर फोटोज, JPEGs, यानी कि Joint Photographic Export Groups. It compressed the image to save space but might lose some quality. PNG, Portable Network Graphics, supports transparency and maintain high quality without losing data. थर्ड हमारे पास है GIF, Graphic Interchange Format, used for simple animations and images with few colors. नेक्स्ट हमारे पास स्टोरिंग ऑडियो। ऑडियो को किस तरह स्टोर करवाया जाता है। ऑडियो फाइल्स आर स्टोर्ड बाय capturing sounds waves and converting them into the digital data. This process involves sampling and quantizations. अगर हम इसके भी सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन की बात करें तो सैम्पलिंग क्या है जी, recording the sound wave at regular interval. The number of samples per second is called the sample rate, or higher sampling rate result in better quality. Quantization, converting each sample into the numbers, more bits per sample provide more accurate sound representation. अगर हम इसके भी फॉर्मेट की बात करें, ऑडियो फाइल फॉर्मेट की, जिस तरह हमारे पास इमेजेस फाइल फॉर्मेट था, इसकी सबसे पहले क्या है, MP3, a common format that compress audio to save space but may lose some quality. Next है wave audio file format, uncompressed format that maintain high quality. अगर हम नेक्स्ट फॉर्मेट की बात करें, AAC, advanced audio coding, used by many streaming services for high quality audio with efficient compression. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्टोरिंग वीडियो। ये वीडियो को किस तरह स्टोर करवाया जाता है। वीडियोज आर मेड अप ऑफ मैनी इमेजेस शो rapidly in sequence along with audio. Each image in a video is called a frame. यानी कि वीडियो के अंदर हर एक इमेज क्या कहलाती है, फ्रेम। फ्रेम्स एंड फ्रेम रेट। फ्रेम रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ फ्रेम्स शो पर सेकेंड measure in frame per seconds, FPS, यानी कॉमन फ्रेम्स rate are 24 FPS used in movies and 30 FPS used in TV. Higher frame rate result in the smoother motion in video. नेक्स्ट है वीडियो फाइल फॉर्मेट्स। हमारे पास कौन कौन से होते हैं जी। MP4, a widely used format that efficiently compresses video while maintaining the quality. Next है AVI, an older format that may be result is larger file size. Next है MKV, support high quality video and multiple audio tracks or subtitles. नेक्स्ट है हमारे पास हाउ कंप्यूटर स्टोर दीज फाइल्स, कि कंप्यूटर इन फाइल्स को स्टोर किस तरह करवाता है अपने अंदर। ऑल दीज फाइल्स, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो आर स्टोर एज बाइनरी डाटा, यानी कि किस फॉर्म में ये स्टोर होता है, बाइनरी डाटा के फॉर्म में, विच मींस दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सीक्वेंस ऑफ 0 और 1. स्टोरेज डिवाइसेस।
हार्डवेयर डिस्क ड्राइव। अब अगर हम स्टोरेज डिवाइस की सबसे पहले क्या, हार्ड ड्राइव, disk drive, HDD, use spinning disk to read write data. They offer larger storage capacities. Second है हमारे पास solid state drive यानी SSD, use flash memory for faster access time and better performance. Next है हमारे पास cloud storage, store files on remote services accessible via the internet, providing the flexibility and backup options. These leads us to an understanding and application to how to images, audio, and video are stored in the computers, allowing us to marvel at the underlying technology of our current digital age. Whether you are taking picture, enjoying music, and watching films, it all stems from how computer manage informal informations. तो ये था आज का हमारा यहाँ तक टॉपिक। तो जो इस चैनल पर नए स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।